Very good morning, fourth class. Today we will cover DG for your 10th chapter in your SST book, that is Industries. Industries को स्टडी किया था हमने, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मिलके इंडस्ट्रीज बनाती हैं. इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो सब हमने स्टडी किया था. आज हम इसके डीजी की हेल्प से इसको और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है. टाइप्स देखते हैं क्या क्या होते हैं इंडस्ट्रीज के. My friends and I make accessories in a small workshop. This has helped us earn a regular income with less investment. I work in a unit that makes and sells marble sculptures. This unit was started mainly because of the easy availability of marble in our area. I am a co-owner of a car manufacturing unit. The government has made 30% of the total investment in the unit. The units that these people work in are quite different from each other. Industrial units can be classified into various groups based on the size, raw materials used, and ownership. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो तीन डिफरेंट लोग थे ये अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है. तो साइज के बेसिस पे सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्रीज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं. To understand how industries can be classified on the basis of size, let us compare a garment manufacturing unit with the car manufacturing unit that we saw in the introduction. The number of people and capital employed in the garment manufacturing unit is very less when compared to the car manufacturing unit. The garment manufacturing unit uses low technology, whereas the car manufacturing unit uses superior technology. और देखो स्टूडेंट्स, एक तरफ तो है ऐसी जो यूनिट है, एक ऐसी कंपनी है, फैक्ट्री है जो कि कपड़ा बनाती है. तो कपड़ा बनाने वाली कंपनी में हमें क्या है, कम लोगों की जरूरत है, कम टेक्नोलॉजी की जरूरत है और कम कैपिटल यानी कि कम पूंजी यानी कि कम पैसा लगाने की जरूरत है. लेकिन अगर हम कार बना रहे हैं, कार क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, काफी हैवी पार्ट्स होते हैं उसके, तो वहां पे हमें ज्यादा लोगों को लगाना होता है और कैपिटल यानी कि पैसों की जरूरत भी ज्यादा होती है और टेक्नोलॉजी भी हमें काफी सुपीरियर यानी कि एडवांस चाहिए होती है, ठीक है. So, the volume of production is less in the garment manufacturing unit and higher in the car manufacturing unit. The garment manufacturing unit is classified as a small-scale industrial unit, while the car manufacturing unit is classified as a large-scale industrial unit. तो स्टूडेंट्स, जो जहाँ पे काम कम, देखो कम लोगों के साथ, कम कैपिटल के साथ और कम टेक्नोलॉजी और जो काम जो सामान बन के आएगा वो भी कम क्वांटिटी का होगा, तो ऐसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट. और जहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हैं, कैपिटल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है और जो प्रोडक्शन होता है वो भी लार्ज वॉल्यूम्स में होता है, लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट. क्लियर? Here is a quick recap of the characteristics of small-scale industries and large-scale industries. रीड आउट Click करेंगे, Continue to proceed. रीड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेस कैपिटल की जरूरत होती है. कैपिटल क्या होती है, जो पैसा लगाया जाता है किसी बिजनेस में, ठीक है. लेस नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होती है, लो टेक्नोलॉजी, लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. लार्ज स्केल में ज्यादा कैपिटल, ज्यादा लोग और सुपीरियर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन भी की क्वांटिटीज जो होती है वो भी ज्यादा होती है. Let us now look at a specific type of small-scale industry. Jacob makes earthen pots at his home and sells them in the local market. His capital investment is very less. Such a small-scale industry is called a cottage industry
or a household industry. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ना कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? जो लोग घरों में ही रह के कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे कि कुम्हार है जो मटके बना रहा है, पॉटर है एक। तो ये क्या है, इसमें कम लेबर की जरूरत होगी, कम लोगों की, और छोटी क्वांटिटीज में इनको जो है रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और जो घर से ही काम करते हैं उनको क्या, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज। Industries can also be classified on the basis of raw materials used. रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा Look at माल। these images. In each of these examples, the type of raw material used is different. The raw material for making sugar is sugarcane, which is an agricultural product. So the sugar industry is called an agro-based industry. The diamond cutting and polishing industry uses diamond. देखो स्टूडेंट, शुगर इंडस्ट्री को कच्चे माल के रूप में किसकी जरूरत होगी? गन्ने की, यानी कि शुगर केन की। ठीक है, गन्ने से ही चीनी बनती है, तो इनको शुगर केन की जरूरत होगी। और जो ये इंडस्ट्री होगी, क्योंकि ये कृषि पे बेस्ड है, खेती पे बेस्ड है, इसलिए इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम कहेंगे। दूसरे हम डायमंड इंडस्ट्री को देखते हैं। A mineral as its raw material. Therefore, this industry is classified as a mineral-based industry. Recall the marble manufacturing unit that we saw in the introduction. This unit is a mineral-based industry as it uses marble, a mineral, as its raw material. Some furniture manufacturing companies use timber to make furniture. Since timber is obtained from trees in the forest, it is a forest-based industry. Fish oil is made from fish, which are marine creatures. फर्नीचर किसके बनते हैं? ज्यादातर टिम्बर क्या है? एक लकड़ी है। वो लकड़ी कहाँ से? जंगल से प्राप्त होती है, हमें जंगल से मिलती है, फॉरेस्ट से। इसलिए फर्नीचर इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उसका कच्चा माल कहाँ से आता है? जंगलों से। क्या आता है कच्चे माल में? लकड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद उन लकड़ियों से फर्नीचर बनता है। So, the units making fish oil are classified as marine-based industries. Therefore, on the basis of raw materials used, industries can be classified into agro-based industries, mineral-based industries, forest-based industries, and marine-based industries. Clear है students? Let us अब हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। The Eiffel Tower is one of the most famous towers in the world. Do you know what it is made of? It is made of iron. Iron is not only found in such structures, but is also used in automobiles, ships, buildings, machinery, and machine tools. लोहा यानी कि आयरन, लोहे की कितनी सारी चीजें बनती हैं आपको बताया। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? जो शिप्स बनाती है, गाड़ियां बनाती हैं, ठीक है, मशीन्स में जो लोहे का यूज होता है, वो तो क्या है? ये आयरन इंडस्ट्रीज कहलाती है। बिल्डिंग्स में या जो भी आपके टूल्स होते हैं, लोहे की कितनी सारी चीजें आपके घर में भी होंगी, है ना? तो वो सारी कहाँ बनी होगी? किसी ना किसी आयरन इंडस्ट्री में बनी होगी। Iron is also used in making steel, such as stationery, household equipments, ठीक है, इनमें भी and iron का यूज होता है। utensils. We use steel in the following segments. In the agricultural sector, in the industrial sector, in transport, and even
in construction. Steel is called the backbone of modern industry and therefore plays a major role in the development of a country. Though iron and steel are two distinct products, manufacturing iron and steel is considered as one industry and is referred to as the iron and steel industry. तो स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं आपको, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एक ही इंडस्ट्री माना जाता है और इस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील के बर्तन होते हैं हमारे घरों में, ठीक है, स्टील की और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं और आयरन का भी आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी लोहे की, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से मिलकर जो इंडस्ट्री बनती है उसको हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। The iron and steel industry is one of the oldest industries in the world. Let us now see how iron is manufactured. अब हम देखेंगे आयरन किस तरीके से बनता है। The raw materials required to manufacture iron are iron ore, limestone, and coke. These raw materials are added to a blast furnace. इस तरीके से बनता है, देखो आयरन। And then air is sent into the furnace. A chemical reaction takes place, and the coke reduces the iron ore to molten iron. The impurities in the iron ore react with the limestone. This reaction results in the formation of slag. This process of converting iron ore into iron is called smelting. We have seen the process of manufacturing iron. You can now identify the inputs and outputs of the manufacturing process. तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से आयरन बनती है, ठीक है। लाइमस्टोन का यूज करके इम्प्योरिटीज को क्लीन किया जाता है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, देखो ये पूरा सेटअप है आयरन को बनाने का, ठीक है। The inputs to this process are the raw materials, labor, capital, site, and other infrastructure. And the outputs of this process are molten iron and slag. Let us now see how steel is manufactured. अब देखते हैं स्टील कैसे बनता है, ठीक है। The molten iron is the main raw material for manufacturing steel. Scrap steel is also used to manufacture new steel. These raw materials are added to a converter. Pure oxygen is blown into the converter to remove impurities. The converter is then heated up to about 2000 degrees Celsius. In approximately 30 minutes, new steel is formed in the converter.
The inputs to this process are molten iron, scrap steel, labor, capital, site, and other infrastructure. And the output of this process is steel. The raw material used to manufacture iron and steel are bulky. ये कच्चा माल यूज होता है देखो इसमें. Therefore, these units are located near coal fields and close to rivers and railways, which help in transport of raw materials. In cases where iron ore is to be imported, these units are located on large areas of flat land near seaports. ठीक है, अगर हमें आयरन ओर को विदेश से मंगाना है, In India, the iron ये इंडस्ट्रीज जो होंगी समुद्र के किनारे मिलेंगी आपको, ठीक है, बड़े बड़े एरियाज में. then steel industry has developed by taking advantage of raw materials, cheap labor, transport, and market. The Tata Iron and Steel Company was the first iron and steel unit in India. The important steel producing centers are Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Rourkela, and Bokaro. ठीक है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है. Apart from India, the other major manufacturers of iron and steel are Germany, USA, China, Japan, and Russia. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने समझा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को किस तरीके से वर्क करती है, कैसे बनाया जाता है, और इंडिया में कहाँ कहाँ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और फॉरेन में यानी कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है वो भी हमने देखा. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आपको समझ में आई, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा हमने. क्लियर.